जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं ज़ैनब, खैरियत से हैं? मुझे अभी बिल्कुल जी याद सर। आया कि मैंने आपको कहा था कल मैं आपको मैसेज करूंगा। मैं इंशाल्लाह आज क्लास से फारिग होकर आपको मैसेज करता हूँ। अबू कैसे हैं, कैसी तबीयत है? सर बस अभी तो वैसी ही है बस। अच्छा, क्या मतलब इज ही क्या अपनी सेंसेस में है? ब्रेन का जो आप बता रही नहीं थी सर, इतना नहीं है सेंसेस, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, और फूड पाइप लग गया था पहले तो उनको, और अच्छा, मतलब रिफ्लेक्सेस काफ़ी हद तक उनकी वो हो गई हैं, और तो खाना बस पीने का ऐसे ये क्या वीक भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खाने पीने का क्या खाना पीना सिलसिला? ड्रिप लगती है रोज़ उनको, और वैसे लिक्विड कोशिश करते हैं बस हर चीज़ उनको देते हैं लिक्विड फॉर्म तो में या ब्लेंड करके इस तरह। वॉशरूम वगैरह उठ के खुद यूज कर लेती हैं, कोई करवा नहीं देता है? नहीं सर, नहीं। बेड पे ही करवा रहे हैं? जी अच्छा, वो एडल्ट डायपर्स होते हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आसानी करे। मैं इंशाल्लाह ना मैं आपको मैसेज करके बताता हूँ। बस कल सुस्ती हो गई। इंशाल्लाह बाकी जी मेडिसिन वगैरह तो अपनी जगह होती है, लेकिन स्टिल द अदर मेडिसिन इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। उस पे हाँ हमारा जी कभी सर, कभी काफ़ी कुछ तो किया ही है ट्राई। मैं इंशाल्लाह आपको ना क्लास के बाद द फर्स्ट थिंग आई डू इज मैं आपको करता हूँ, आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके चलो जी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। या राबिया तो आज ट्रैवल कर रही है, वो आ नहीं रही। बस इंशाल्लाह जस्ट गिव मी 1 मिनट, इंशाल्लाह वी विल बिगिन जस्ट इन अ मिनट। डॉक्यूमेंट्स खोल लूं अपने सारे। अल्लाह अकबर। ओके, सेक्शन 17। चलिए जी, हम शुरू करते हैं, बाकी the others will join in. Let me see if I've started the recording. Yes, I have. चलिए जी, हमारा इंशाल्लाह we are starting with a new topic, and as I said, हमारा इंशाल्लाह जो बाकी remaining portion है, that is comparatively very easy as compared to what alhamdulillah we have been covered so far. So this starts our 17th topic of your syllabus, which is natural selection and evolution. मैं इंशाल्लाह आपको लेसन शुरू करने से पहले थोड़ा सा वर्ड्स आई व्यू दूंगा ऑफ द सिलेबस. As you can see on the screen, your syllabus divides this particular topic into 3 major components. और इस टॉपिक में मजे की बात ये है कि all 50 to 60% of what we will be doing is something that you've done already, precisely this in a similar format, in a similar detail, जो O levels में है. आपको अगर याद होगा नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, एंड दीज यानी कि ये जितनी भी टर्म्स मैं ले रहा हूँ, these are not new for you. Of course, I'm not saying कि आपको students they remember each and everything, but I mean the point is we do have a vague idea. All of this is not supposed to be something really new and something to this effect. So आज इंशाल्लाह हम जो बात करेंगे majority of that will be what was the first topic of inheritance in O levels, that's variation. ठीक है, the continuous and the discontinuous, और उससे related इंशाल्लाह कुछ मजीद इसमें से थोड़ा इस टॉपिक में थोड़ा सा ओवरलैप है ऑफ इनहेरिटेड चेंज. बहुत ज़्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह we will see that also. And the second thing I plan to do today is a statistical test जो कि इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है. तो इंशाल्लाह मेरा आज का टारगेट ये 2 चीजें हैं. But quickly before that, if you look at the screen, you can clearly see that this is 17.1, 17.2, and then you have 17.3. 17.1 is all about variation. ठीक है, variation क्या है, variation की types क्या हैं, and all of that stuff, the continuous, discontinuous. And then you can see 17.1 C says use t-test to compare the variation of 2 different populations. तो जिस तरह chi-square test एक था inherited change में,
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे टी टेस्ट, ठीक है। तो उसकी इंशाल्लाह मैं आज आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा which will clarify that what this thing is all about. Okay, and then we have 17.2, which is really interesting, natural selection and artificial selection. इसके जो क्वेश्चंस हैं पेपर में वो कुछ केस स्टडी टाइप आते हैं। केस स्टडी का क्या मतलब है, वो आपको सिनेरियोज देंगे, लेकिन जो आंसर है it fits just like the answer is a skeletal answer. And by that I mean is it's a typical skeleton format that you have to follow कि natural selection में ये होता है, artificial में ये होता है, यानी कि you have to overlap, if you like, that skeleton over the situation. So the reason I'm telling you this is असल में ये टॉपिक जब बच्चे करते हैं तो उनको बहुत इजी लगता है, दे टेक नोट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट व्हेन दे लुक एट द क्वेश्चंस, आई एम सेइंग लुकिंग एट द क्वेश्चन, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन, व्हेन दे लुक एट द क्वेश्चन दे गेट वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज उसमें अपेरेंटली डिटेल काफी होती है। मसलन मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखाने लगा हूं, नेचुरल सिलेक्शन, ठहरे एक सेकंड, ओके, ये देखिए अब आज इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। ये आप टॉपिक ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये अक्टूबर नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। नीचे पार्ट देखो 2 मार्क्स का है, एक्सप्लेन व्हाई द बिल्ड साइज इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब उसने एक पूरा केस दे दिया आपको। इस तरह के क्वेश्चंस अपेरेंटली पहली नजर देखने में तो बहुत बॉम्बास्टिक और मुश्किल लगते हैं, लेकिन आप यकीन करें they are very easy. You just have to read them once and twice, and if you know the concepts, that these questions are a piece of cake. Okay, तो ये बात ज़हन में रखें, ये questions देखने में बहुत खौफनाक लगेंगे आपको, with खौफनाक because of the fact that they have so much information, but trust me, that's very easy. Okay, but that being said, let's come back quickly. तो ये तो हो गया आपका 17.2। इसमें फिर कुछ नई चीजें जो हैं आप देख रही हैं, you have not talked about Hardy-Weinberg principle. This is something new that inshallah we will talk about. And this F part, outline the following examples of crop movement by selective breeding. आपको याद होगा O levels में आपने different examples देखी होंगी कि improved milk किस तरह कर सकते हैं, Australian cows and all of that stuff. I mean, so it's more or less the same. And then finally, 17.3 आपके पास है एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन की डिटेल, और इसमें कुछ जो नई चीजें हैं जो कि आपने ओ लेवल्स में नहीं देखी, वो दीज आर द फॉलोइंग लास्ट 3 पार्ट्स इंशाल्लाह व्हिच वी विल लुक एट इन डिटेल। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वी शुड बी डन विद दिस टॉपिक इन 2 वीक्स, यानी कि 6 लेसन्स इन टोटल शुड बी मोर देन इनफ इंशाल्लाह। तो ये दिस इज अ बर्ड्स आई व्यू of the topic. So let's jump into our topic. I will begin our discussion with the very basic idea, and that is variation. Okay, चलिए जी हम देखते हैं वेरिएशन। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपको कहूं कि आप जरा सोचें और just think about this, that what is variation. ये जेनेटिक्स में इनहेरिटेड चेंज में हमने इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ आंसर करने की कोशिश की थी, यानी कि क्योंकि देखें वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वेरिएशन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ वेरिएशन इटसेल्फ। ठीक है, तो हम वेरिएशन को बहुत सिंपल तरीके से मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। वेरिएशन का मतलब है सिमिलैरिटीज yet differences, and let me qualify that with an example. ठीक है, क्या मतलब, यानी कि अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, हम एक बड़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फैमिली। ठीक है, फैमिली में यूजुअली क्या होता है, यू हैव पेरेंट्स एंड यू हैव सिबलिंग्स, चिल्ड्रन। ठीक है, अब आप कोई भी फैमिली उठा लें, the mother and the father, of course they are not going to look similar unless they are related in the first place. The children are usually similar to their parents, yet they are not an exact copy, थोड़े से वो different होते हैं, and that difference
is basically termed as variation. तो अगर हम variation को generally define करने की कोशिश करें, it is basically the slight change in the phenotype, if you like, अगर मैं inheritance की terminologies use करूं, and that is basically because of the variation in genes, and we have studied in detail the causes of variation uh, before. ठीक है? अच्छा, अब that brings us directly to the types of variation. ठीक है? यानी कि वेरिएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम उसकी दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बना देते हैं, and the types are the following. I hope you remember. The first one is known as discontinuous variation. ठीक है? And the other is known as the continuous variation. ठीक हो गया? So these are the two types, if you like, of variations that are. आपको कुछ याद है ज़ैनब, back from O levels क्या था इनका difference क्या था? अगर थोड़ा सा मैं आपको सर सोचें. याद नहीं एग्जैक्टली मुझे. अच्छा चलें, मैं आपको हिंट देता हूँ. देखिए, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो यानी कि वेरिएशन इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस, राइट? वी एग्री दैट इट्स ऑल अबाउट डिफरेंसेस. नाउ differences can be, number one, due to genes, or they can be due to the environment, or they can be due to both of them. ठीक है? तो ओ लेवल्स में आपको ये बताया था कि discontinuous variation जो है, that is only because of genes. ठीक है? Only because of genes. और कंटिन्यूस वेरिएशन में आपको बताया था इट इज बिकॉज ऑफ जीन्स एंड द एनवायरनमेंट. इंशाल्लाह इस पे हम थोड़ा सा एक्सपाउंड करेंगे इस आइडिया पे. आई विल गिव यू फीचर्स एंड बुलेट पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो अबाउट बोथ ऑफ देम एंड देयर डिफरेंसेस. लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है? ये चलें, इनके पहले हम यस लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोस्टली द कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय अ नंबर ऑफ जीन्स. बाय जीन्स तो यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था? वन जीन इज कंट्रोलिंग वन कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जांपल आई कलर के लिए एक जीन है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रही है. अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, बात खत्म. Then we moved on to the idea of dihybrid, which was two genes controlling. यानी कि दो different हम जो है वो characteristics देख रहे थे. Now I want to introduce you to two new terminologies that are, number one, polygenes. ठीक है? और इसी से related है polygenic inheritance. The idea is not a very alien and a new idea. The idea is actually very simple. Let me explain just a minute. देखें, polygenes का क्या मतलब है? Let me define this thing first. इसकी definition आप note कर लें साथ, फिर मैं आपको explain करता हूँ. So, we will define polygenes as group of genes that together determine group of genes that together determine a characteristic, a particular characteristic. क्या मतलब? देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें. अभी तक हमने ये देखा था वन जीन वन कैरेक्टरिस्टिक, बात खत्म. लेकिन नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू एन आइडिया व्हिच इज वन कैरेक्टरिस्टिक बीइंग डिटरमिन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ जीन्स. यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर हम आई कलर की बात कर रहे हैं, एक phenotype is being controlled by many genes. Okay, and इसी की जो inheritance है उसको हम कहेंगे polygenic inheritance. यानी कि if I were to define polygenic inheritance, it will be, it is the inheritance of phenotypes, inheritance of phenotypes
that are determined by the collective effect of several genes that are determined by collective effect of several genes. ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड एक वर्ड आप सुनेंगी, आपकी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैट इज द आइडिया ऑफ एडिटिव जीन्स. ओके, और एडिटिव जीन्स को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, सिंस दैट टॉपिक इज रिलेटेड, एडिटिव जीन्स का क्या मतलब है? द जीन्स दैट गिव द एडिटिव इफेक्ट. ओके, असल में मार्क्स की में ये टर्मिनोलॉजी जो है, this terminology is there in the mark scheme, so therefore I am letting you know earlier कि ये जो हम polygenes की बात करें, poly का मतलब many genes, I mean because they are combining and giving an effect, so that is why we say that that means an additive effect. Okay, but whatever the case is, so ये मैं आपको एक idea introduce करवाना चाह रहा था. अब हम आते हैं, let's talk about continuous variation and discontinuous variation. Okay, so I'm gonna make सबसे पहले हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए इसके फीचर्स के बारे में, और फिर इसकी जो टिपिकल डायग्राम्स हैं उसकी भी हम बात करते हैं. So the first thing that we need to know is that this particular type of discontinuous variation, of course we're talking about variation, that's obviously understood, लेकिन मैं लिख देता हूँ चलिए. So this is controlled by one gene. कुछ केसेस में हम फ्यू भी लिख सकते हैं, वन या फ्यू genes control a phenotype. Genes control a phenotype. ठीक है, अच्छा जी. नंबर टू, इट इज, अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के वर्ड में क्या फर्क होगा, यानी कि it's very simple that I will say that quantitative is something that I can quantify a number. काफी चीज नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये जो discontinuous variation है, this is qualitative. क्या मतलब, what do I mean when I say this is qualitative? What that means is that either the feature is present or absent. Either feature is present or absent. और इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है, वो आपके, यानी कि आप ब्लड ग्रुप्स की एग्जांपल देख लें. सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल. सेल एनीमिया, यानी कि ये सिकल सेल एनीमिया, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप कनाडा में बैठे हो, environment इफेक्ट नहीं करेगा. It is only determined by the genes. Okay, so we say that either the feature is present or absent. It's qualitative in nature. Okay, and by the way, all of these points are individual marking points. Okay, अच्छा, उसके बाद देखें, अगर आप एग्जाम्पल देखें ब्लड ग्रुप्स की, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप्स कितने हैं जी? ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप ए, यानी कि अगर आप उनकी बात करें, इनकी एलील्स की बात ही कर लें, तो आपको पता है कि देयर आर ओनली 3 alleles. One of the 3 alleles, the blood group is determined by one of these 3 alleles, I, B, IA and IO. ठीक है, so what is that telling us? That is telling us that it has discrete categories. ये मैं caps में लिख रहा हूँ just to make sure that you understand that this is important. Discrete categories या फिर no intermediates. इंशाल्लाह इसको अभी मैं जब continuous variation के साथ compare करता हूँ तो आप you will appreciate this more. Okay, so there are no intermediates. Now, another thing that we need to understand is that different alleles at a single gene locus have large effect on a phenotype. क्या मतलब ठहरे, इस पॉइंट को लिख लेना. Different alleles
at a single gene have different alleles at a single gene locus. Sorry, इसका क्या मतलब है? I'll just explain. Just write it down. At a single gene locus, have large effect on phenotype. Have large effect on phenotype. देखें, आपको ये पता है कि एक जीन के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है? वो एक ही जीन, यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्रोमोसोम, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर जीन लोकस, ओके, हमें पता है कि अगर क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर ऑलवेज होमोलोगस, तो इसके जो पेयर के साथ होगा, यानी कि इट विल बी द सेम जीन, लेकिन ये ए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी हो सकती है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है, और homozygous recessive भी हो सकती है. Of course, if that is if you're just only considering one gene. लेकिन we know that that's not the case in real. So different alleles, for example, capital A, small a, at a single gene locus have large effect on phenotype. Okay? अच्छा जी. उसके बाद different genes have different effects. Different genes have different. ये बड़ा obvious सा sentence है. लेकिन इस why is this to be included in discontinuous variation? Because since it's only controlled by genes, therefore अगर ये देखें ना, आप IA को देख लें, इसका अलग इफेक्ट है, IB का अलग इफेक्ट है, IO का अलग इफेक्ट है, IA और B इकट्ठे आ जाएं तो वो कोडोमिनेंट है. So that's what I mean when I say different genes have different effects. Okay? अच्छा जी, उसके बाद discontinuous variation में of course the most important thing जो कि हमें पहले लिख देनी चाहिए थी, लेकिन चले सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता. There's almost no contribution by the environment. No contribution by the environment to phenotype. ठीक हो गया? ये तो obvious सी बात है, since this is discontinuous variation, we're dealing with genes only. और इसकी classical examples जो आपने याद रखती हैं एग्जाम में कोट करने के लिए, they are example albinism, ठीक है, albinos जो होते हैं, फिर इसी तरह sickle cell anemia, ठीक है, फिर इसी तरह Huntington's disease जो हमने देखा था. And I mean sickle cell anemia is a classical example that you can remember. Huntington's disease. I mean, all of these are examples. और ये देखें, ये वो disease हैं कि इनसे इन diseases की वजह से environment नहीं influence करती. I mean, it's only all about genes. So this is more or less what you need to know about discontinuous variation. Now let me give you some diagrams that you will appreciate more when it comes to. अच्छा, अब इसका जो graph बनता है वो आप ज़हन में रखें कि इसका graph is typically not the shape of a typical graph, but it is usually the shape of what we formally call as the bar graph. Okay. So if you can, अच्छा जी, ये आ गया जी, continuous आ गया और discontinuous किधर गया? Yes. Okay, where did that go? Hi. Okay, I found it. There you go. So this is a classical example of a diagram that is showing discontinuous variation. यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डायग्राम कौन सी वेरिएशन को रिप्रेजेंट करी. आप देखें कि ब्लड ग्रुप्स और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के अगेंस्ट है. डिस्क्रीट फॉर्म, देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज. डिस्क्रीट यानी कि कोई बीच में नहीं है कि कोई ए बी का या कोई ए बी ओ का या फिर बी और ए बी का कोई मिक्सचर हो. दे आर सेपरेट, डिस्टिंक्ट एंड डिस्क्रीट फॉर्म्स. एंड रिमेंबर दैट इट्स यूजुअली बार ग्राफ that is representative of the discontinuous variation. ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद we have continuous variation. अब आप अगर
सारे पॉइंट्स डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के देख के उसी के साथ इसको कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगी. लेट्स डू इट विद दिस विद ग्रीन कलर. सो फॉर कंटिन्यूस वेरिएशन it is controlled by several genes control a phenotype. Several genes control phenotype. वहां पे क्या था, एक या फिर only few of them. ठीक है, और ये it is quantitative. Again, when I say it is quantitative का क्या मतलब है? Quantitative को हम यानी कि we will say that they can be measured. That's how you qualify it. Can be measured. ये कुछ एग्जाम्पल याद है आपको इसकी ज़ैनब कि मैं बताऊं? और इस पे रेंज ऑफ कैटेगरीज होती हैं. इसकी जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो आपकी हाइट है. ठीक है, ह्यूमन हाइट फॉर एग्जाम्पल. सो रेंज ऑफ कैटेगरीज हैं या फिर हम कहते हैं मेनी इंटरमीडिएट्स. I won't take our traditional 1 minute break today क्योंकि आज चांस की बात है सब बच्चों के मुझे मैसेज आए हुए हैं कि जी रिकॉर्डिंग भेजें. और ये इस बात से आप बखूबी वाकिफ होंगी कि रिकॉर्डिंग्स जब पाइल अप हो जाती हैं तो एक सरदर्द और स्यापा होता है. सो इंशाल्लाह I'll just wind this topic up today. So just bear with me inshallah. Okay. A range of categories, many intermediates, और फिर उसके बाद different alleles at single gene locus have small effects. Different alleles at single gene locus have small effects. क्यों ऐसा क्यों है? और discontinuous पे big effects है. देखिए, because continuous variation is not only being influenced by genes, but it is also being influenced by environment. Okay. So इसीलिए इसका जो different alleles हैं at single gene locus, they have small. I'm not saying they don't have an effect. No, असल में genes और environment दोनों influence कर रहे हैं. So we have to distinguish between that. Okay. अच्छा जी. So अगला point लिख देते हैं कि environment has a considerable influence on phenotype. ठीक हो गया. और इसकी एग्जाम्पल टिपिकल जो आपने याद रखनी है वो हाइट है या फिर मास हो सकता है. और इसका अगर आप डायग्राम देखें, इट्स डायग्राम इज टिपिकली व्हाट वी कॉल एज इस कर्व को क्या कहते हैं, कुछ याद है? स्टैट्स में इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. आप अगर इसकी डायग्राम देखें तो आप देखें कि एक्स एक्सिस पे हाइट है, इसकी many categories हैं, unlike discontinuous variation which only had few categories, discrete categories. Okay, और ये range है. और आप देखें typical distribution curve बन रहा है, normal distribution का मतलब है कि ग्राफ की शेप जो है वो इस तरह की बनेगी. ठीक है, that's basically what typically this particular thing it means. Okay. And by the way, more or less, this was something similar that you had seen back in O levels also. तो अब मैं करूँगा क्या? I have इसके जितने भी questions थे, जितने तो खैर नहीं, लेकिन पिछले 3 सालों में, including ये COVID वाला 2020 वाला पास पेपर, उसमें ये जो questions थे वो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं. So let's look at them together and see what the past papers have to say about such questions. Okay, so variation both continuous and discontinuous. ओके, चलें जी, इसको हम थोड़ा सा चलें इसको मुझे वैसे दूसरे पेज पे डालना चाहिए था. ठहरे जरा एक सेकंड. पेज करके डिलीट होगा. ठहरे बच्चे एक सेकंड. सो चलें जी,
let me add a page. Past. Okay, there you go. बहुत ज्यादा नहीं मैंने डाले, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस के लिए थोड़े से हम देख लेते हैं. चलें जी. दिस इज मई जून 2006. जैनब बच्चे, सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? जी सर. ओके ग्रेट. चलें जी. जी सर. ठीक है, अब देखें. दिस इज मई जून 2016. क्वेश्चन 4 पार्ट, एक पार्ट का मैंने एक स्क्रिप्ट लिया. वो कह रहा है वेरिएशन इन हाइट ऑफ अ स्ट्रेन ऑफ व्हीट प्लांट्स इन अ फील्ड shows continuous pattern of variation. And now we understand what continuous is. उसने कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ली हुई है. असल में इस टॉपिक में याद रखें, मैंने टॉपिक के शुरू में आपको बताई ये बात इसलिए थी कि केस स्टडीज होंगी. वो अपने हिसाब से किसी भी चीज की एग्जांपल का केस स्टडी दे देगा. वो जौन सी मर्जी एग्जांपल उठा के दे, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है. वी आर जस्ट कंसर्न दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, सो अब वो कह रहा है कि जी एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंटिन्यूअस वेरिएशन. दैट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. And explain why this type of variation occurs in a population. ठीक है, अच्छा जी. तो अगर आप इसकी मार्क स्कीम देखें, बल्कि मार्क स्कीम देखने से पहले अगर मैं आपको कहूं कि सोचें जरा थोड़ा सा. Of course, explain what is meant by continuous variation is very easy to explain. We know the facts, we can explain. But how do I answer the second part? Explain why this type of variation occurs in a population. क्यों होती है इस तरह की वेरिएशन पॉपुलेशन में? ये आंसर भी असल में उसकी टोटल एक्सप्लेनेशन से ही रिलेटेड है. सो लेट्स लुक एट this particular mark scheme. Number 1, range of phenotypes and heights. ठीक है, आप हमें पता है कि continuous variation में discrete नहीं है, few forms नहीं है, but there is a range of phenotypes या height. क्योंकि यहाँ पे height क्यों कह रहा है? बिकॉज यहाँ पे उसने क्वेश्चन में आपको जो ट्रेड दिया वो height है. अच्छा, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको अभी समझाया, विच मीन्स कि इसको अगर आप प्लॉट करें तो आपके पास जो ग्राफ आएगा that is typically has a normal distribution curve, and as I said, the normal distribution curve is supposed to look something like the following. और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, polygenic genes और alleles have an additive effect. ये मैंने आपको अभी शुरू में एक्सप्लेन किया है कि continuous variation में generally speaking, because we are talking about genes also, तो एक ट्रेट को काफी सारी जीन्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं. दिस इज नोन, दैट इफेक्ट इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. और इसी चीज को देखें, उसने यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट भी कहा. आई मीन इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, एडिटिव इफेक्ट, दैट ऑल ऑफ द जीन्स दे एड अप टू वन पर्टिकुलर ट्रेट. ठीक है, और फिर सिर्फ जीन्स का इफेक्ट नहीं है, सिंस हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो उसमें एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करती है. एंड देन ऑफ कोर्स नेम्ड एनवायरमेंटल फैक्टर, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स उसको किस तरह के मिल रहे हैं. सिंस बात किसकी हो रही है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो हम वीट प्लांट्स की बात कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट अबाउट प्लांट्स हैविंग द करेक्ट जीन्स फॉर देम टू ग्रो. इट्स ऑल्सो अबाउट सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, लाइट इंटेंसिटी कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, सॉइल का पीएच कैसा है, और डिजीज अवेलेबिलिटी कैसी है, टेम्परेचर, विंड, एंड सो ऑन सो फोर्थ. लेट्स लुक एट व्हाट द एग्जामिनर हैज टू से. Okay, this question was generally answered in insufficient detail as many candidates gave weak responses that continuous variation refers to phenotypes not being in discrete groups. ठीक है, क्या मतलब? यानी कि वो कह रहा है कि ये insufficient detail है कि आप सिर्फ ये बता दें कि not कि the continuous refers to phenotypes not being in discrete groups. Some candidates were able to discuss the range of phenotypes observed, such as through the mention of the intermediate values or any value between extremes. क्या मतलब? देखें, आप अपनी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ख़वातीन की एवरेज हाइट क्या होती है? What's your height, if you don't mind me asking, Zainab? Sir, 5'4". 5'4", and that's the average height. ठीक है, अब मुझे बताएं कि एवरेज हाइट क्या है पाकिस्तानी ख़वातीन की? यही है मेरे ख्याल से, समथिंग अराउंड 5'4", 5, यानी कि दिस इज अ नॉर्मल हाइट, राइट? बहुत छोटी हाइट, अगर
आपने अपने एक्सपीरियंस में मुझे बताएं कि छोटी से छोटी भी अगर कोई लड़की देखी है तो कितनी होगी अंदाजा? एनी गर्ल बिफोर बिलो 5? यू सीन गर्ल्स बिलो 5? सिर्फ 5 तक ही देखा है। वैसे तो थोड़ी बेचारी हो जाती हैं 4-8 भी, लेकिन वो हील वूल पहन के गुजारा कर लेती हैं, लेकिन चले हम 5। बट कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ हाउ टॉल वुमेन हैव यू सीन? लंबी से लंबी खातून आपने कितनी देखी है? पाकिस्तानी खातून की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 5'8"। चलो जी, आप फिर मेरी अम्मी से नहीं मिली। माय मदर इज 5'10" माशाल्लाह। ओह, सो आई मीन दैट्स जनरली फॉर फीमेल्स। यानी कि हमारे कल्चर में मैक्स भी है। वैसे तो काफी लंबी लंबी खवातीन भी होती हैं, लेकिन बहरहाल इट रन्स इन द फैमिली। सो आई मीन व्हेन द एग्जामिनर इस, ये जो देखें मैंने आपको बताया ना कि ये वाली वैल्यू है, यानी कि 5.4 की जो रेंज के आसपास वैल्यूज होंगी उनको हम कहते हैं, वी कॉल देम एज इंटरमीडिएट वैल्यूज। ठीक है, जो कि ये है। और जो एक्सट्रीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? 5 वाली और 5'10" वाली। ठीक है, और अगर आप मेल्स की एग्जांपल देख लें तो आई थिंक द एवरेज हाइट इज 5, आई डोंट नो, 5'10" मे बी। नहीं, 5'8" कर लेते हैं, इतने भी लंबे नहीं होते। बारह बेचारे कुछ छोटे छोटे भी हो जाते हैं, और मेरे जैसे कुछ लंबे काफ़ी जो हैं वो लाइक 6'3" एंड 6'3" हमारे कल्चर में काफ़ी जो है ना वो किंग कॉन्ग साइज होता है। सो आई मीन आई नो दिस रन्स इन माय फैमिली सिंस माय मॉम इज 5'10", सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। बहरहाल मेरे वालिद साहब 5'8" हैं, and people laugh about this and I always tell this to my students. Yes, my mom is taller than my dad is. I mean, doesn't make any difference honestly. और हाँ मतलब so I mean again 5.4 6.3 are the extremes and 5'8" is the intermediate value. So this is basically what he's saying. ये देखो second point से मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ. Some candidates were able to discuss the range in phenotypes observed such as through the mention of, अब देखो ये keywords हैं intermediate अब आप एग्जामिनर को वैल्यूज तो नहीं दे रहे, आपसे वो सिंपली पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करें, तो the choice of word is basically depicting all of that. Okay, any value between the extremes, although the normal distribution of such phenotypes was rarely described. Again, normal distribution का मतलब क्या है कि अगर ये x axis पे height है तो यहाँ पे जो है, यानी कि जो intermediate है यहाँ पे सबसे ज्यादा है और extremes वाले बहुत कम कम है. ठीक है, I'm sorry, height should be on the y axis if I'm not wrong. मैं खुद तो नहीं कंफ्यूज कर रहा है इसको, कंफर्म कर लूँ. मैंने पीछे ग्राफ यही वाला दिया है. The height is supposed to be, yes, no, the height is supposed to be on the x-axis and the number of individuals, I'm sorry, is on the uh, y-axis. Anyhow, of the few drawn examples of normal distribution, many were not labeled in full. देखिए अब ये बात भी important है. जिस तरह मैं कंफ्यूज हुआ उस तरह बच्चे भी बहुत ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज होते हैं. Where did the page go? Okay, here it is. आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि ये जो लेबलिंग है इनकी एक्सिस की, कंटिन्यूस वेरिएशन में देखें एक्स एक्सिस में आप हाइट को लेबल कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है वाई एक्सिस पे, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज, बाय फ्रीक्वेंसी आई मीन द नंबर ऑफ पीपल इन द कैटेगरी. ओके, ऑलराइट. Where candidates understood continuous variation, they most frequently described it as an interaction with the environment, often quoting a named environmental factor such as temperature or nutrients. A large minority were able to name polygenes and additive effects, but sometimes it was incorrectly described as a single gene effect with minimal number of alleles. हालांकि polygenes देखें अपने word में क्या मतलब है. poly का मतलब होता है many. Okay, so additive, that is basically what additive effect means. Anyhow, this is also a lovely question which says ये है जी मई जून उसी साल का दूसरा वेरिएंट है. पिछला वेरिएंट आई थिंक 4.2 था और ये 4.1 है. ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है जो मैंने आपके लिए सामने रखा है. Figure 4.1 shows part of a maize cob. The cob is made up of many individual seeds called kernels. Each kernel results from a separate fertilization of a male and a female gamete. Some kernels are yellow, some kernels are purple. अब अगर आप if you read in between the lines, कितने phenotypes की बात कर रहा है वो, ज़रा बताएं ज़रा मुझे. बहुत सारे phenotypes की बात कर रहा है.
नहीं सर। 2 की बात कर रहा है। सो जी। इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फ्यू फॉर्म्स की बात ही हो रही है। नीचे वो कह रहा है नेम द टाइप ऑफ वेरिएशन शोन इन फिगर 4.1, दैट्स नंबर 1। फिर वो कह रहा है सजेस्ट अ जेनेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन कलर। असल में जेनेटिक ये वाला जो पार्ट है ना, दिस आंसर हैज टू डू मोर विद इनहेरिटेड चेंज, लेकिन रीजन मैंने आपको ये दिखाया है वो इसलिए कि आप देख के किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सी वेरिएशन है। आप क्लियरली देख रहे हैं कि इट ओनली हैज फ्यू फॉर्म्स, यानी कि देयर ओनली 2 फॉर्म्स। सो क्लियरली दिस इज डिसकंटिन्यूअस। यानी कि आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट भी तो इन्फ्लुएंस कर सकता है कलर को, लेकिन असल में सिंस it is only few distinct forms and that's a typical characteristic feature of discontinuous variation। और फिर जो इसकी ये देखें एक्सप्लेनेशन है डिसकंटिन्यूस देखें B1 को उसने कहा हुआ है, और वो फिर वो कह रहा है कि वन जीन सिंगल लोकस, सिंस मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूस वेरिएशन में पोली जीन्स का रेडिएटिव इफेक्ट होता है, इट्स नॉट फॉर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। और फिर इसकी पॉसिबिलिटी कि अगर वो दे रहा है, आपको अगर याद हो कि ये जो फिनोटाइप्स आ रहे हैं ये दिस इज बेसिकली 1:1, और 1:1 का जो रिजल्ट है वो किस केस में आता था, जब आप किस चीज को किस चीज के साथ क्रॉस करते थे, कुछ याद है? इफ यू क्रॉस्ड फॉर एग्जांपल होमोजाइगस डोमिनेंट विद हेटेरोजाइगस, ओके। मैंने आपको ये चीजें बताई थी, तो देखें ये उसने बेसिकली दिया हुआ है। सो आई मीन दैट वाज really not what I wanted here to figure out, but that's basically how it is। अच्छा जी, फिर ये मैं आपको इस क्वेश्चन पेंगुइन वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये मई जून 2020 कोविड में आया है, लेकिन बेचारा ये बस क्वेश्चन ही बना है, किसी ने आंसर नहीं किया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूजिंग नेम्ड एग्जांपल्स डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स मैंने जो आपको लिखवाए हैं वो बेसिकली मार्क्स स्कीम के पॉइंट्स का ही आप समझे समरी और निचोड़ है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल क्लियर कट, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाने वाला क्वेश्चन नहीं है। It's basically the same that I explained. So this is for worth for 8 marks. मैं आपके साथ इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट क्लास के एंड पे शेयर कर दूंगा anyway. So now let's look at this last question. अब देखो ये इतना बड़ा केस स्टडी है, लेकिन एंड पे उसने क्या पूछा है। So let's try and understand this question. This is October-November 2019. A 28-year study of penguins, Phoenix जो भी नाम है, SM, found in Argentina provides evidence for natural selection. Okay, I know we still haven't done natural selection, but let's see what the question is all about. Penguins lay eggs in their nests. They use their bills, इस चीज को bill कह रहे हैं, beaks to catch prey and feed their chicks offspring. ठीक है? अच्छा जी, each breeding pair of penguins uses the same nest each year. ठीक है, 2-3 बातें उसने बताई हैं। पहली बात ये है कि वो नेस्ट में एग्स डालते हैं, पहली बात। फिर वो बीक्स के साथ खाना खुद भी खाते हैं, एंड दे फीड देयर चिक्स, एंड देन ईच ब्रीडिंग पेयर यूजेस द सेम नेस्ट ईच ईयर। सो ओके, दीज आर द 3 थिंग्स दैट ही हैज मेंशन्ड। फिर वो कह रहा है डेटा वाज वर कलेक्टेड फॉर बिल साइज एवरी ईयर फ्रॉम 1983 to 2010. Bill size was calculated using length and depth of bill. Bill size showed variation between individuals. Okay. In 1983, all penguins in one area were tagged. Tag का मतलब किसी भी तरीके से उनको टैग कर दिया होगा। ये वो फेसबुक टैग वाला नहीं है, ये फिजिकली टैग है। All tagged penguins were measured each year and new chicks were tagged and measured. For each year of study, an estimate of food availability was made. A statistical analysis was conducted to quantify whether selection had taken place. Selection का concept ठीक है, हमने नहीं किया, लेकिन question में वो आपसे ये पूछ रहा है, explain why bill size is an example of continuous variation. कौन कौन से फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की केस स्टडी में जो कि इसको इस केस स्टडी को फिट कर रहे हैं इस एग्जांपल को इन कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड नॉट इन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस। मैं अभी आपको डायरेक्ट मार्क्स स्कीम नहीं दिखा रहा, सोचें जरा। एंड दैट्स द इंशाल्लाह द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग, सो जस्ट थिंक अबाउट इट।
सोचें ज़रा, क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा देख लें, सोचें ज़रा। आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस एंड देन लेट मी नो। क्यों, व्हाई डू यू थिंक दिस इज कंटिन्यूअस? सर कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रेंज ऑफ कैटेगरीज, और डिफरेंट जीन्स हैं, डिफरेंट फिनोटाइप्स। ओके यस। ओके, अच्छा देखें, पहली बात तो आपकी ठीक हो गई। देखो, ओके गुड, शाबाश। ये देखें जरा, नॉट डिस्क्रीट यानी कि कैटेगरीज हैं, जिस तरह कि आपने कहा रेंज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेफरेंस, यानी कि आप अगर देखें, उसने कहा है कि वैल्यूज कलेक्ट किए, ऑल्दो उसने यहाँ पे बताया नहीं है कि हमने क्या कहा है, लेकिन क्योंकि उसने कह दिया है कि व्हाई इज दिस एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, तो आप उसको वो सारे फीचर्स कोट कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूअस वेरिएशन के होते हैं, कि नॉर्मल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा, इट इज बिकॉज ऑफ पॉलीजेनिक इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट, और एनवायरनमेंट का भी लार्ज इफेक्ट है, क्योंकि वो देखें 1983 से 2010 तक केस स्टडी जा रहा है। आई मीन क्वेश्चन बहुत सिंपल था, उसने, ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन हैज अदर पार्ट्स आल्सो, लेकिन सिंपली अगर वो आपसे कह रहा है कि कोई चीज कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों है, तो इसीलिए क्योंकि उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि हम कंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी, चलें जी। सो लेट्स एंड आवर सेशन हियर टुडे, बल्कि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके यहीं पे